Okay. Yes, students. अच्छा पहले तो assignment है. Everyone is having assignment with them. Yes. So what is the topic of today's session? The topic. आपके पास है क्या टॉपिक का नाम है? पंजाई. अब मुझे बताओ किसी ने कभी पंजाई देखी है? Have you seen any पंजाई? Raise your hand. Just raise your hand. Have you seen? Okay, move on. एक काम करो बच्चे, पहले सुनो. जो आगे बैठे ना फर्स्ट टू बेंचेस गर्ल्स और बॉयज प्लीज पीछे चले जाओ बिकॉज यू आर नॉट विजिबल टू मी. Okay, I can see that many of you are saying that ma'am your voice is not audible. Now get the reason because earlier you got the reason yourself. So what was the reason? Because noise is coming from your side. So because of that you were not able to hear me. So for to hear me, what you have to do? Be silent. Okay? So that is how you can hear me. Now I am clearly audible to you. Raise your hand if I am clearly audible to you. So that's good. So because now you are on mute by itself. ठीक है? अपने आप से आप mute पे हो. मैंने mute नहीं किया हुआ. Okay. So that is how we are going to start our class. So my question was, have you seen fungi? We fungi, just raise your hand. 1 2 3 4 5 6. Sirs 6 students have seen fungi. That's very shocking because किसी के कोई ब्रेड में कोई आपने ग्रोथ नहीं देखी ग्रीन कलर की? हैव यू सीन एनी ग्रोथ ओवर ब्रेड स्पेशली इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट, हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट? कभी आपका लंच बॉक्स स्कूल में रह गया हो या घर पे रह गया हो और 2 दिन बाद आपने खोला हो, हैव यू सीन एनी कॉटन लाइक स्ट्रक्चर? कभी देखा है? Yes. तो देख, आप में से कौन कौन मशरूम खाता है? Everybody. अगेन स्टूडेंट्स, बाकी क्या है? मशरूम नहीं खाते? डोंट ईट मशरूम. मशरूम इज गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, सो मगर मशरूम देखा तो होगा, वैसा मत बोलना कि यू हैवंट सीन मशरूम. देखा है मशरूम? Yes. अभी जो हमने सब नाम लिए किसका था ये जो भी हमने डिस्कस किया, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, व्हाट आर दीज? क्या है ये? अब बोल सकते हो आप कि आपने पंजाई नहीं देखा? पंजाई देखा है, योर डे टू डे लाइफ यू हैव सीन पंजाई. अभी तो बरसातें शुरू होंगी तो आपको तो बहुत दिखेंगे, दीवारों पे कॉटनी स्ट्रक्चर दिखेगा, शूज पे कई बार जो अगर पानी चला जाए 3 4 दिन बाद, यू कैन सी द फंगस इज ग्रोइंग ओवर देयर आल्सो. So fungus can grow anywhere, but for that fungus need environment, and that environment is hot and humid. ठीक है? And that is approaching. वो आ रहा है. ठीक है? ज़्यादा दूर नहीं है. Because it's already May month. From June onwards, monsoon season will arrive. है ना? So we can see that. So before this, can any one of you tell me what is fungi? Fungi होती क्या है? आपका पहले तो ये चैप्टर हो चुका है. Is this chapter done in your class? Yes, ma'am. So you can easily answer this. अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं what is fungi, can you tell me? क्या होती है? fungi क्या होती है? It's prokaryotic, eukaryotic. कौन सा karyotic? मुझे सिर्फ karyotic सुनाई दिया ना, प्रो ना यू. क्या सुना है? बोलो बेटा, प्रो या यू? Eukaryotic. Yes, it's eukaryotic. Now it's multicellular or unicellular? Unicellular.
सेलुलर के लिए हैंड रेस करो. दोज हु आर अग्री दैट इट्स यूनिसेलुलर, रेज योर हैंड. सुनाई तो मुझे दिया था, बोल. कोई हैंड रेज नहीं हो रहा. किसने बोला था? बाहर से कोई आवाज दे गया था? बाहर से किसने बोल के गया था यूनिसेलुलर? क्योंकि भाग तो किसी के नहीं खड़े हुए. चलो, मल्टी सेलुलर कौन कौन अग्री कर रहा है? मल्टी सेलुलर. ओके, यू आर सेइंग इट्स मल्टी सेलुलर. Okay, you are right. It's multicellular, but here is one exception. कोई exception का नाम बता सकता है? That fungi is unicellular and that you use also to bake cake. तो हो गया हमारे पास ये unicellular also. So we have unicellular fungi also, that is yeast, and that we use to bake our yummy cakes. Yes. So देखो सब कुछ हमारे सामने पड़ा है. बायो इज इन फ्रंट ऑफ अस ओनली. बस हमें क्या देखना है? थोड़ा ऑब्जर्व करके देखना है कि बायो कहाँ यूज हो रही है. वेयर वी आर यूजिंग दिस बायोलॉजी. ठीक है. इट्स ऑल अबाउट अस. इट्स ऑल अबाउट आवर सराउंडिंग ओनली. ठीक है. तो फंजाई हमने पढ़ा क्या है? यूकैरियोटिक, multicellular majorly, but one exception, that is an yeast, that is unicellular. So with this, let's start. Okay. So 5 kingdoms are there. यहाँ पर 5 kingdom है. Can you tell me the name of those 5 kingdoms? चलो मुझे आप ही में से बता दो जो आप सबने बोला. किसको समझ आया? क्या बोल गए? खुद को समझ आया? So make it clear what you have to do. Raise your hand. ठीक है. So that I can understand. मुझे भी तो समझाओ क्या बोल रहे हो. So raise your hand. So tell me the 5 kingdoms name. I can see fourth bench girl in the middle. Yes, beta. Yes. हाँ जी. Stand up. Kingdom Animalia, Kingdom Plantae, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Flora. That's good. Sit down. That's good. So it was proposed by Whitaker. Okay. And the first kingdom, let me fix the brightness first so that you can see. Okay. So first was Monera. Monera was in this we have bacteria. Okay. And we have prokaryotes in this category. And the mostly organisms are not visible through our naked eye. So to visualize these microorganisms, we need microscope. Okay. So these are prokaryotic unicellular bacteria. So इसमें हम अगर further characterize नहीं कर रहे because we are going to study only about the fungi, but it is divided into archaebacteria and bacteria. ठीक है. Coming to next, protista. So protista are eukaryotes. These are not prokaryotes. So अगर हम बात करें मोनेरा के अलावा बाकी सब यूकैरियोट्स है. ठीक है. Only Monera is prokaryote. So it's eukaryotic, unicellular and simple multicellular in many cases. ठीक है. Coming to next one, that is fungi. So fungi, it's eukaryotic, multicellular and its absorption. Here you can see the absorptive heterotrophs. Can you tell me the meaning of this? Mode of nutrition of fungi is absorptive heterotrophs. Can you tell me what does it mean? क्या होता है absorptive? हमने heterotrophs सुना था, autotrophs सुना था. ये नया टर्म कहाँ से आ गया? absorptive heterotrophs. क्या होता है इसका मतलब? कोई बता सकता है? Can you tell me? Yes, first French girl. Yes, beta. And the absorptive mode of nutrition means heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. Repeat, beta. It means absorptive heterotrophic mode of nutrition means heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, that comes under, okay, that is also part of, we can say, heterotrophic. But here word is absorptive. That they digest their food outside their body and absorb the nutrients. Yes, that is correct. Yes, that's right, beta. Sit down. So absorptive means, beta, पहले मुझे बताओ सबको digestive system पता है? Everyone knows about the digestive system. 5 points of digestive system.
ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. सबको पता है 5 स्टेप्स? Yes, ma'am. अब जो हमारी बॉडी में ये जो थर्ड स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन, वो क्या होता है? वो पूरे खाने का होता है, ये जो खाना ऑलरेडी टूट चुका है, सिंपल हो चुका है, दैट वी एब्जॉर्ब। क्या होता है? जो खाना हमने ब्रेक हो चुका है दैट इज डाइजेस्टेड, मीन्स वो ब्रेक डाउन हो चुका है इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स, लाइक वी कैन से प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट इनटू व्हाट, और वी कैन से स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ठीक है, fats into fatty acids. So this is a simple components. So these simple components absorbed by our body. जबकि अगर हम कहें कि हमसे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च या प्रोटीन्स या फिर अगर हम कहें फैट, our body cannot absorb these complex molecules. That's why digestion happens before absorption. तो पहले उसको क्या करना पड़ता है? उसको स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स या फिर हम कहें एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है दैट कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसका एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। सो फंजाई बाहर से, उसकी बॉडी के बाहर से जो फूड है, सिंपल फूड दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय फंजाई, उसको यूज करता है, उसको लेता है, एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट नहीं कर रहा, इंजेस्ट नहीं कर रहा उस वे में जैसे हम कर रहे हैं। तो बाहर ही वो जो है एक्स्ट्रा सेलुलर अपनी बॉडी के बाहर जो है उस पे एक्ट करके उसको सिंपल बना के देन उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग टर्म एब्जॉर्प्टिव। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ इट्स क्लियर। ओके, so next is planting. So eukaryotic, multicellular and photosynthetic means it can make their own food itself. It doesn't depend upon any other organism. Last is animalia and we humans are in this category. Animalia. ठीक है? Eukaryotic, multicellular, here the heterotrophs we are ingested. Why we are ingested? Because we ingest food. हम खाने को पहले अंदर लेते हैं देन उसको जो है ब्रेक करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है पहले से खाना जो है डाइजेस्ट होके बाहर पड़ा है, वी आर जस्ट एब्जॉर्बिंग इट, वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर डूइंग ऑल द टास्क बाय सेल्फ, ठीक है। अपने आप से हम सारा ये टास्क खुद कर रहे हैं। इज इट क्लियर? डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्टिव एंड इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. Okay, okay. So now with this, let's move ahead. Yes. तो जरा फंजाई का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एवरीवन ड्रॉ, सबने ये स्टार्ट करो। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पता होगा देन यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट और प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। ओके, it is eukaryotes means it has nucleus, well defined nucleus, that's why it is eukaryote, क्योंकि इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। देन like other organism, not animal, because animal doesn't have cell wall, ठीक है, we don't have cell wall, it has cell wall। fungi जो है उसके पास cell wall होती है, it has cell wall, but the composition of the cell wall is different from others। बाकी जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उसका cell wall composition and the cell wall composition of this fungi is different because it is made up of, or it is having chitin. Its cell wall is made up of chitin, ठीक है। इसको नोट करो बेटा, सबने ध्यान से अच्छे से बनाना है इसको। और इसके पास बाकी ऑर्गेनाइज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज भी है जो कि इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट डिफरेंशिएट इट। और भी इसका डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं जो, अच्छा चलो ये यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर है मेजरली, ठीक है, व्हाई कांट बी पुट दिस फंजाई इनटू एनिमेलिया कैटेगरी? हमने इसे एनिमेलिया वाले में क्यों नहीं डाला?
Can any one of you tell me why it's not in Animalia category? उस वाले kingdom में क्यों नहीं हमने डाल दिया? Because it's heterotroph, it's not autotroph. So why it is here in separate kingdom system? इसका अलग सा क्यों है? Any cell wall? Cell wall is the reason here. In animals, animals don't have cell wall. We don't have cell wall. We have cell membrane. Okay, we don't have cell wall. So that's why it is not in Animalia category. But it is having cell wall like plant. Like plant, it is having cell wall. So why it is not under plant category? अब तो इसके पास cell wall है just like plant has cell wall. So why it is not in that category? Because of its chitin. That is the reason. Mode of reproduction of fungi and plant is similar. It's different. So mode यहाँ पर आ जाएगा mode of nutrition. सेल वॉल का कंपोजिशन तो चलो हम कंसीडर करते हैं एक्सकाइटन और उसका सेलुलोसिस, ठीक है, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हियर इट इज वी कैन से सिंपल टर्म में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक. वैसे तो एग्जॉक्टिव है, हमने पहले पढ़ लिया. हेटेरोट्रॉफिक, एग्जॉक्टिव, ठीक है. इन केस ऑफ प्लांट्स इट इज ऑटोट्रॉफिक. It's autotrophic. So that's why it is not in that category. ठीक है, इस वजह से हमने इसको प्लांट्स वाली कैटेगरी में भी नहीं डाला. और बाकी जो इससे पहले थी, अगर हम कहें प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इज मेजरली यूनिसेलुलर. दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर. अगर वो मल्टी सॉरी यूनिसेलुलर तो होती है, और दे आर मोस्टली लैकिंग सेल वॉल. मोस्टली उनमें सेल वॉल नहीं होती. अगर उनमें सेल वॉल होती है किसी में, सो दैट इज सेलुलोसिस, नॉट काइटेनिस. जैसे इसमें काइटन की है, उनकी सेलुलोसिस होती है. देन मोनेरा, मोनेरा इज प्रोकैरियोट एंड इट इज यूकैरियोट. So that is why fungi is different from rest of the four kingdoms. Is it clear? Yes. क्योंकि पहले हमें बेटा ये पता होना चाहिए कि अगर हम फंजाई पढ़ रहे हैं, why we are studying about fungi, how it is different from rest of the four kingdoms. ठीक है? Is it clear how it is different from rest of the four kingdoms? Yes. Okay. Okay. अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर में. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं हम. जो फंजाई है, अब आपने मशरूम किसी ने कटा हुआ देखा है? अगर खाया नहीं है, कटा हुआ तो देखा होगा. मस्ट हैव सीन. यस, देखा है? अब कई बार आपने अगर मशरूम का जो ध्यान से देखो, कई बार दिखता भी नहीं है. यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा धागा सा निकला होता है, छोटा छोटा सा. देखा है ऐसा कुछ? Yes. जो ये धागे से होते हैं फंजाई में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज व्हाट इट इज कॉल्ड? हाइफा. इसको ड्रॉ कर लो बेटा, याद रहेगा. इफ यू ड्रॉ योरसेल्फ देन यू रिमेंबर इट. एंड इन बायो आई वुड प्रेफर यू यूज कलरफुल पेन्स. ठीक है, दिस इज हाइफ. अब देखो, अगर हमारे पास धागा पड़ा है और अगर हम कहें हमारे पास वूल का थ्रेड पड़ा है, अगर हम उसे निट करें, मतलब उसको हम जो है निटिंग करें, उसको बुनाई करें, तो हम उसे धागा तो नहीं कहते ना. फिर हम क्या कहते हैं उसे? कुछ स्वेटर बन गया है ना, हम कहते हैं कि कपड़ा है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. अब उसका नाम हो जाता है. सिमिलरली जब ये हाइफा आपस में ऐसे जो है फर्दर स्ट्रक्चर बनाता है, नेटवर्क बनाता है आपस में ऐसे, so it is not called hypha then, it is called mycelium. It is called mycelium. It is mycelium then. Is it clear?
अब ये हाइफा कब बनेगा? ऑब्वियसली सेल डिवीजन होगी, एवरीथिंग है ना, जो प्रोसेस होता है इट विल फॉलो दैट प्रोसेस। जो ये हाइफा है इसके अंदर ये सारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। कैन आई मूव अहेड? Yes. So I'll show you here. This is the hypha, ठीक है। In this cytoplasm is there. अब ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, अगर जो हमारा ये है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है या सेल वॉल है, कंप्लीटली या फिर हमने डिवाइड नहीं हुई है, एक पार्टीशन होता है न्यूक्लियस के बाद, उसको फॉलो नहीं हुआ है, तो क्या होता है? यू विल सी मल्टी न्यूक्लियस हियर, it will be multi-nucleated. There is no partition, no covering. Everywhere is cytoplasm and nucleus. This type of hypha is called aseptate or phenocytes or xenocytes. Next is अगर हाइफा के बीच में पार्टीशन हो जाए, ओके, लाइक दिस, वॉल बन जाए, and now it's having nucleus in each compartment. So this hypha now called septate hypha. It will be called septate hypha. It is having pores also. ठीक है, यहाँ पर इसके pores भी होते हैं, receptor pores. पोर यानी छेद, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले ये हो जाए तो मुझे बताना बेटा, इट्स डन, सो देन वी कैन मूव। डन। अब इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। सेप्टेट की बात करें, हम टॉकिंग अबाउट द सेप्टेट वन, जो मैंने अभी आपको पोर्स की बात की है। सो दिस इज द पोर, बीच में ये, अगर ये ऐसी सिंपल लाइन बेस जैसा आपको दिख रहा है, अगर ऐसा होगा तो इसको हम कहेंगे सिंपल सेप्टेट हाइड्रा। एक और कैटेगरी है, वी हैव सेम, लेकिन जैसे हमारा, अगर हम के ऐसे, अगर हम मुट्ठी बंद कर ले और ऐसे रखे अपना हाथ, ओके, लाइक दिस शेप, एंड से सोलन, ऐसे, अगर ऐसा है, तो इट इज कॉल्ड डॉलीपोर। इसको विदाउट सेप्टेट यू कैन ऑल्सो कॉल डॉलीपोर। सेप्टेट की जगह हम डॉलीपोर हाइफा भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? दीज सेप्टेट्स आर क्लियर, हाइफाज आर क्लियर बेटा? Yes, simple hypha. Then we have then septate hypha, sinusitic hypha. All these are clear. Yes. Okay.
ड्रॉ हो गया बेटा? इज इट डन? ओके, so this is all about hypha. Mycelium is network of hypha. You can note down वहां पर जहाँ पर हमने mycelium बनाया, so you can note down there. It's a network of hypha. ठीक है? So let's see some terms. और अभी हमने जो है modes of nutrition देखा था. Okay, we have seen modes of nutrition. So उसके basis पे we can divide fungi also. उनके nutrition के basis पे. So how? Into three categories. ऐसे फ्लो चार्ट बनाओ बेटा, ऐसे बनाओ इसको. Parasitic, saprobic, and last one is symbiote. So we can categorize fungi into these categories. ठीक है? Can you tell me what do you understand by the term parasite? And how parasites are different from saprophytes? Can any one of you give me example or differentiate between these two? Where we are saying it's parasite, where we can say it's saprophyte. Can you tell me what is the difference between parasites and saprophytes? Anyone? Okay, shall I call rule number 3? Roll numbers are not allowed. Okay, so I have to call by name. Or shall I call by? Okay. So second bench girl, ajo corner में जो है towards curtain. जो एसी वाली साइड वॉल है उसकी बात कर रही हूँ. एसी वाली वॉल एक ही साइड है. चलो आ जाओ बेटा. वहीं से खड़े होकर बोल दो. सो ये पैरासिटिक क्या होता है बेटा? पैरासाइट्स क्या होते हैं? Parasite host the body with the parasitic gland. नॉट अंडरस्टूड. क्या बोला बेटा? आराम से बोलो, थोड़ा सा स्लो. Parasite host the body with feet content. बेटा आप आगे आ जाओ माइक के पास. अब यहाँ खड़े होके बोलो. यही खड़े हो जाओ, मुझे दिखने भी चाहिए ना. यस. Parasite host the body with feet content. जो होस्ट की बॉडी में लिव करते हैं, रहते हैं. फीड करते हैं मतलब उनको खाते हैं. सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं? क्या करते हैं? बताओ आप सब में से किस किस ने एक बहुत बेसिक थिंग सुनी हुई है जब आप छोटे थे, स्पेशली गर्ल्स. ठीक है, ध्यान से सुनना. क्या आपके बालों में जुएं पड़ी हैं? अभी नहीं मुकर जाना है ना इस टाइम तो, बिकॉज यू आर ऑन कैमरा है ना, और एवरीवन इज हियर, सो यू विल से नो. दैट आई ऑलरेडी नो. ठीक है, मुझे पहले से पता. अगर नहीं पढ़ी देखी तो होंगी कभी किसी को, कभी किसी के पढ़ते सुना होगा कि इसके फलाने फ्रेंड है जो उसके गिर गए सर पे, है ना, सुना है मैंने. अच्छा जुआ ये वाला वर्ड लाइस सुना हुआ है? Okay, so you are familiar with this, that's right. अब मुझे बताओ, that lice is parasitic or saprophyte? Why? Why so? एक बच्चा बोलेगा जिसको आता है जो बोल रहे हैं. अच्छा आप बैठो बेटा, आप बैठो. थर्ड बेंच में कॉर्नर गर्ल जो है, यस, थर्ड बेंच आप ही के पीछे कॉर्नर में जो रास्ता है उसके साथ. थर्ड बेंच नहीं टुवर्ड्स वॉल नहीं, जो दूसरी साइड है. हाँ बेटा, क्योंकि आप बोल रहे थे. नाउ यू विल टेल. Feeds on the body of host. Feed on the body of host. So what saprophyte does that? They feed on their denticles.
Dead and decay. So what is the difference? Now you can tell me because you itself say something. That is the difference. चलो बताओ फिर क्या difference हुआ? पैरासाइट कौन से ऑर्गेनिज्म पे रहेगा, डेड या लाइव? लिविंग। लिविंग में है ना। और जो सेप्रोफाइट्स है दे लिव ऑन और दे फीड ऑन डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म. So that is the very first and important difference between parasite and saprophytes. Okay. So parasite जब हम word use कर रहे हैं, ठीक है, they are living with host, living host. ठीक है, जो लिविंग होस्ट है उसके साथ रहता है और उसको हार्म पहुंचाता है. सेप्रोफाइट्स डेड और डिके ऑर्गेनिज्म के पास जाता है फीड के लिए, नॉट लिविंग वन. ठीक है, उसको नहीं वो हार्म पहुंचाएगा भी. ठीक है, अब आप कहोगे फंगस इन्फेक्शन हो गया, वो हो गया, ये हो गया, दैट इज डिफरेंट. दैट इज नॉट रिलेटेड टू वी कैन से इट्स न्यूट्रिशन. Generally, if you see fungus, they grow on humid, hot environment and on dead or decay organs. So their nutrition is saprophytic. They excrete, they pour their enzymes. जो उनके enzymes हैं वो बाहर निकालते हैं और डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डालते हैं. So वो enzyme digest करते हैं outside their body. And when that food is digested, break down into simpler molecules, then fungus absorb that food. That's why their mode of nutrition is absorptive heterotrophic. So parasitic में, okay. So first is we have parasitic, ठीक है. Digested food from host. अब कौन होस्ट है इसका एग्जांपल वी कैन टेक व्हाइट ब्रॉड मस्ट. ठीक है, वेयर इट्स इन व्हीट प्लांट. तो व्हीट प्लांट का जो ऑलरेडी जो सिंपलर फूड है उसको ये फीड करता है. ठीक है, उसको वो खाता है. सेप्रोबिक नहीं सेप्रोफाइटिक. ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं. सो इन दिस दे pour their enzyme on the food outside their body. ठीक है, तो इसमें लिखे outside the body on dead or decay organisms. Okay, and after that it absorbs the food. Okay, symbiote means a kind of interaction where both partners are getting benefited. दोनों का फायदा हो रहा है. So example is very widely accepted example is lichen. So lichen is association of fungi with algae. और इसमें जो एसोसिएशन है फंजाई को कहा जाता है माइक्रोबायोम एंड एल्गी इज कॉल्ड फाइकोबायोम. तो हमने इसको थोड़ा सा पहले ही पढ़ लिया था सेप्रोबिक वाला. तो सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. न्यूट्रिशन इज क्लियर बेटा. पैरासिटिक सेप्रोफिटिक एंड सिम्बायोट, इज इट क्लियर? Yes. ओके, सो नाउ लेट्स मूव. ठीक है, अब और जरा फ्लैजिला सॉरी फंजाई के बारे में पढ़ते हैं. तो इसमें लोकोमोशन कैसे होता है, इसको लिखते चलो. लोकोमोशन बाय फ्लैजिला. They can respire in both ways, anaerobically or aerobically. Aerobically and anaerobically. And anaerobic respiration is basically useful to us to bake many things, cake,
Okay. In the brewery industries also, even in the wine industries also. So there we use this. Okay. Now reproduction. So it can reproduce by both the method, asexual and sexual. It's one only, sexual. And sexually it reproduces by three ways. Fragmentation. Fragmentation, you know that it fragments like this. Okay, it's like this. Then coming to budding, so it makes small bird-like structure, and then get detached. इसको साथ से बेटा इसे फटाफट ड्रॉ करते चलो. And lastly, asexual spores. Asexual spores. जल्दी जल्दी बनाओ बेटा. Excuse me. Yes, sir. Ma'am, their class would be up to what time? Like, Okay, just give me ma'am 1 minute. I will wrap it. Okay, ma'am. actually, plus two students they are waiting for the next class, right? Just give me 1 or 2 minutes. Okay, thank you, ma'am. So yes, बेटा फटाफट इस वाले को complete करो. Sexually, we have three ways. First is isogamous, then an isogamous, and third is ogamous. Ogamous. ठीक है? In isogamous, both gametes having same size and shape. उनका shape और size same होता है. Gametes का. In an isogamous, जो एक है वो बड़ा होगा और एक जो है वो छोटा होगा. And here it is not defined whether it's male or female. ठीक है? In an isogamous. In ogamous, female is always big and male is always small. Reason is female reserve food. Female reserve food, that's why it's big in size as compared to male. और ये सिर्फ ogamous में होता है. So just note down this and then your class is over. Yes, ma'am. Okay, then you are moving to the class. Kindly move silently. Okay, the classes are.